Hello guys, Cam Joe. I'm your host Nishit Dave, and what a Sunday we had. Both the teams winning quite easily. It was Bangalore in the first game and Chennai in the second. So yes, quite dominant performances that we saw today. But Virat Kohli was on fire today, not just while batting, but also in the post-match interview. Yes, sir, we'll discuss about that later in the video. Also, Chennai finally wins again. Yes, बीच में ऐसा लग रहा था कि there's a little slump और टीम कॉम्बिनेशन सही नहीं लग रहे हैं, कभी कभी ऋतु 3 पे आ रहे हैं, बट वट एवर दे डिड अगेन winning at their home, they have been very dominant. They have the highest winning percentage at their home, and they again make justice to that. Well, there's a lot to talk about in this video, so without wasting any further time, let's dig in deep. Well, पहले तो पहली मैच से शुरुआत करते हैं. इट वाज जीटी वर्सेस आरसीबी और फर्स्ट ऑफ ऑल 201 रन चेस करने थे एंड आरसीबी डिड इट विथ 16 ओवर्स. 4 ओवर बाकी रह गए एंड दे वॉन इट क्वाइट कंफर्टेबली. पहले अगर बात करें, विल जैक्स वाज प्लेइंग 19 ऑफ 19 व्हेन ही स्टार्टेड, बट उस टाइम पे विराट कोहली इज इंपॉर्टेंट इनिंग्स, और हम पूरे जो आरसीबी की बैटिंग होगी उसमें बात करेंगे. विराट कोहली इज इंपॉर्टेंट इनिंग्स, द वे ही just maneuvered the strike rate that he was playing, the way he shifted gears was very important in bringing out the best of Willjacks. पहले तो जब भी आप 201 शुरुआत कर रहे हो, आरसीबी would want that they would go and kill it in the power play, and that's what they did. Faf played a good cameo. Starting में काफी quick fire 25 उन्होंने बनाए. Again, moving forward, Willjacks जैसे ही आते हैं बैटिंग करने, गुजरात had already introduced spin. और हमने जानते हैं कि गुजरात की मेन स्ट्रेंथ यही है कि दे आर ग्रेट विद द स्पिन बॉलर्स इनटू द अटैक. वेल, टुडे विराट कोहली टुक डाउन स्पिन, एंड यस, भले ही उन्होंने पोस्ट मैच में आके ऐसा बोला हो कि मेरी स्ट्राइक रेट लो है या मैं स्पिन के सामने अच्छा नहीं खेलता, ये लोग जो भी कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोल रहे हैं, आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 15 years एंड माय मेन एम इज टू विन द गेम्स फॉर माय टीम. वेल, he was on fire certainly, but yes, उनके stats के हिसाब से भाई साहब नंबर तो कम ही थे स्पिन के सामने, but not today. Today he brought that aggressive strike rate that he's batting with throughout this season on a great display against spin as well. और जैसे ही फैफ डुप्लेसी आउट होते हैं वैसे ही विराट कोहली picked out. उन्होंने एकदम अपने बॉलर सिलेक्ट कर लिए थे. He picked out perfect areas to hit the ball और clean striking एकदम. Of course, it's Virat Kohli. What can you expect? Again, that's where Willjacks got that cushion. जैसा कि मैंने कहा, Willjacks was 19 of 19 to start off with. He was struggling with the timing at that moment, but it was Virat Kohli who maintained that run rate to 10 per over. So yes, जैसे ही फिर Willjacks ने मारना शुरू किया, it was fabulous. He got the last 50 runs for him in just 10 deliveries. Last 28 in just 5. It was fabulous. और तो और राशिद खान जैसे बढ़िया स्पिनर को आपने एक ओवर में 28 रन्स के लिए धो दिया है एकदम ही. He was on 72 when he started that 16th over, and आखिरी बॉल पे एक रन चाहिए था and for the victory, but for his century it was a 6 that was required and he hit that again. तो मतलब जो एक्सेलरेशन किया है विल जैक्स ने, इट वाज सुपर्ब. ही डेफिनेटली फॉर मी इज इन अ कंटेंशन फॉर द रिटेनर्स लिस्ट फॉर आरसीबी. ही इज वेरी गुड. विल जैक्स का पावर हिटिंग कैपेबिलिटीज आज हमने देखा, बट मेन वरीज नाउ फोकसिंग ऑन टुवर्ड्स गुजरात. फर्स्ट ऑफ ऑल, शुभमन गिल एंड साहा's ओपनिंग पार्टनरशिप इज नॉट वर्किंग. कुछ भी कह लो, पावर प्ले 6 ओवर वो लोग कभी साथ में खेल ही नहीं पा रहे हैं. साई सुदर्शन इज इन ग्रेट फॉर्म. आज भी हमने देखा, मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट सेंचुरी तक पहुंच जाएंगे, बट टुवर्ड्स द एंड ठीक है, नहीं हो पाई. ही वाज नॉट एबल टू कनेक्ट वेरी वेल, बट शाहरुख खान प्रमोशन was the positive for them. आज उन्होंने एक क्विक फायर 50 किया and that's what stabilized the innings for Gujarat. वरना वो लोग 200 भी नहीं पहुंच रहे थे. And honestly, when they reached 200, I thought it was a par score on this pitch. Yes, बड़ा ग्राउंड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, and the pitch is a little turning track. So 200 plus runs, especially धूप में इतनी, ball will grip more. और हमने देखा कि हो भी रहा था ऐसा जब राशिद खान बोल रहे
बॉलिंग कर रहे थे. इवन साई किशोर व्हेन ही केम आउट टू बोल, देयर वाज अ लिटिल ग्रिप, बट इट वाज नॉट जस्ट हैपनिंग द गुजरात वे. आज हमने देखा कि फील्डिंग पोजीशंस काफी वियर्ड थी. प्लस चलो ठीक है, फील्डिंग पोजीशंस तो समझ में भी आता है कि प्लान के हिसाब से बॉलिंग नहीं चल रही थी तो नहीं एग्जीक्यूट हो पाया, बट फील्डिंग ओवरऑल वाज नॉट गुड. 2 से 3 बाउंड्रीज आपने जाने दी है, मिसफील्ड्स किए. So yes, they were not able to create that pressure on RCB. But again, the big credit for that goes to Virat Kohli and Willjacks, who were able to rotate the strike very well. And of course, Virat Kohli, who maneuvered that strike rate beautifully. एक बार देखा Faf du Plessis starting पहली 2 ओवर में मार रहे थे. He took a back seat, give the strike to Faf. जैसे ही Faf आउट होते हैं, he upped his strike rate और पावर प्ले बहुत ही तगड़ा निकाला आरसीबी के लिए. Then again, he took केयर ऑफ दोज मिडल ओवर्स. और फिर जैसे ही विल जैक्स ने मारना शुरू किया, विराट कोहली वाज लाइक, यस यू डिजर्व मोर स्ट्राइक, यू आर हिटिंग द बॉल आउट ऑफ द पार्क ऑलमोस्ट एवरी डिलीवरी. बट अगेन बिग वरी साइन फॉर गुजरात इज मोहित शर्मा. पिछली 2 मैचेस में से हमने देख लिया और ऑलमोस्ट इस पूरी सीजन हम एक ट्रेंड ऑब्जर्व करते आ रहे हैं दैट हिज स्लोअर बॉल्स आर बीन पिक्ड बाय द बैटर्स क्वाइट इजीली. और वो वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मोहित शर्मा जैसे बॉलिंग करने के लिए आते हैं, दे एक्सपेक्ट दैट ही विल बी थ्रोइंग द स्लोअर बॉल्स इनटू द सरफेस, और वो ऑलरेडी उस पोजीशन में आ जा रहे हैं. आज भी हमने देखा जो एक वो क्विक बाउंसर उन्हें डाला था, दैट सरप्राइज्ड विल जैक्स मोर देन द स्लोअर डिलीवरीज. अगेन मोहित शर्मा जैसे बॉलिंग करने आए, विल जैक्स गॉट हिज टच बैक, a little bit pace on the ball and not so very good areas to bowl at also. So yes, GT needs to figure that out. मेरा यही है कि आप मोहित शर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं, उनको रेस्ट दे सकते हैं. he has been playing a lot. दर्शन नालकंडे, who did a good job for you at the start of the innings, you can bring him in again. उमर जाई को आप एज अ बैटर यूज नहीं कर रहे, तो इफ इट इज पॉसिबल ब्रिंग इन स्पेंसर जॉनसन, जो आपको बहुत अच्छी एक क्विक पेस डिलीवरीज देते हैं, ब्रिंग्स अ डिफरेंट डायमेंशन टू द बॉलिंग अटैक. तो आप ये 2 चेंजेस कर सकते हैं बॉलिंग में, अदरवाइज दे वुड जस्ट लैग बिहाइंड. बट यस, Bangalore won 2-2 and I would not say keep your hopes high. मतलब it is almost practically not possible to get there to top 4, and if they do, it will be a story of lifetime. At the moment, after winning 2-2 and also considerably winning with a dominant position today, they are still at the bottom of the table. But just as Virat Kohli said in the team meeting, that's what they discuss. They want to play for their self-respect. This is not how they expect all the world-class players to perform, that they end up in that 10th position. So yes, RCB is playing that fearless and bold brand of cricket that we expected from them from the start of the season. But yes, फिलहाल इतने मैचेस के बाद, ऑलमोस्ट 10 मैचेस के बाद, आई थिंक आरसीबी हैज फाइनली फिगर्ड आउट देयर परफेक्ट प्लेइंग 11. सो यस, आरसीबी इज लुकिंग वेरी वेरी गुड. अगेन Virat Kohli, I'm mightily impressed, and I'm mightily impressed by Willjacks. The hitting capability is superb. ये 200 का टारगेट इतना इजीली चेस डाउन नहीं होना चाहिए था. The pitch was gripping a little bit, but that was some phenomenal hitting. बिल्कुल एबी डिविलियर्स की याद करवा दी. बट यस, जैसा कि मैंने कहा, ही इज वन प्लेयर दैट आरसीबी माइट think to retain coming in the mega auctions, because he is just a great power hitter. But yes, that was all for the first game, and now we move on towards the second game, where again CSK dominated. Another beautiful innings from Ruturaj Gaikwad. जैसा कि मैंने जीटी के लिए बात किया था अभी पहले वीडियो में, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चल रही है, सेम सीएसके के लिए ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चल रही है, बट देयर कैप्टन ऋतुराज has been playing some amazing innings. He is finishing off the games almost every time they are playing at Chennai. पिछली मैच में he got a beautiful 100. आज भी he missed out on 100 by 2 runs, और आखिरी तक आते आते भाई बहुत थक गए थे वो. He was not just able to put power behind his shots, and he missed out on a very well deserved 100. और जब भी हम इस पेडिग्री के प्लेयर को 100 करते हुए देखते हैं, तो एक कॉमन फैक्ट आता है कि ही इज प्लेइंग क्रिकेटिंग शॉट्स टू गेट देयर. आज भी विराट कोहली व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ, आई एम सॉरी मैं बार बार आरसीबी और विराट कोहली को लेके आ रहा हूं इस मैच में, बट दैट वाज अ काइंड ऑफ इनिंग्स दैट आई एक्सपेक्ट हिम
to play against spinners के सामने he was sweeping the ball और बहुत बढ़िया से बैटिंग की थी उन्होंने. एंड सिमिलर फॉर ऋतुराज गायकवाड, बहुत ही बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट, स्वीपिंग द स्पिनर्स, अगेन प्लेइंग वेरी स्ट्रेट बैटेड शॉट्स एंड हिटिंग परफेक्ट एरियाज, परफेक्ट कैप पिकिंग कर रहे थे एंड अगेन प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स. बट अगेन दिस पिच was not supposed to go 200 plus. मेरे हिसाब से इस पिच पे पार स्कोर would have been 190, but they again went above 200 plus, and that is because of Shivam Dube. Another fabulous inning with a great strike rate. This guy is performing with a great strike rate day in and day out for CSK, and I think he's a sure shot for the World Cup squad. But बस मैं यही चाहता हूँ कि बॉलिंग फॉर्म भी उनका अच्छा हो. Other than that, this guy is amazing against the spin and as well as against the pace. अब आज भी हमने देखा जैसे ही शिवम दुबे आए, spinners were taken out of the attack, but he was able to attack the pace as good as the spin. And finally, we did see MS Dhoni, a little glimpse of him, and again got a boundary of his first ball, rotated the strike, and Dube did the rest. Again, it was fabulous. धोनी जब भी सीएसके की ग्राउंड पे एंट्री करते हैं, इट इज जस्ट द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग टू सी. द क्राउड गोज बिज़ार, मतलब इतना लाउड हो जाता है, टीवी का वॉल्यूम आपको कम करना पड़ता है. सो आई कैन नॉट इमेजिन हाउ इट इज इन दैट स्टेडियम वॉचिंग इट, बट यस, बहुत ही बढ़िया माहौल होता है. एंड यस, शुड नॉट फॉरगेट डेरिल मिचेल. आज भी उन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया. Again, I am making a comparison between Willjacks and Daryl Mitchell. Willjacks definitely outperformed for RCB, but Daryl Mitchell very similar innings. Starting में थोड़ा टाइम लिया, पिच के बाउंस को, पिच की ग्रिप को समझा, and once he understood the basics of the pitch, he went hitting. और आज भी converted that slow start to a very good finish for Daryl Mitchell. मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पे आई थिंक दे आर डूइंग परफेक्टली वेल विद डेरिल मिचेल, तो वहां पे कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होने चाहिए. बट यस, दे वुड एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम रहाने टू ओपन विथ. बट इट वाज तुषार देशपांडे टुडे हु पुट हिज हैंड अप एंड सेड आई विल गेट यू द विकेट्स इन द पावर प्ले. हैदराबाद के सामने इफ यू गेट अर्ली विकेट्स दे वुड बी पुट अंडर प्रेशर, एंड तुषार देशपांडे डिड एग्जैक्टली दैट. मतलब सीएसके के लिए तुषार देशपांडे ऐसा परफॉर्म करते हैं जैसे वो जसप्रीत बुमराह हो. It is fabulous, but also important to point out CSK grabbed on to their chances. Catches miss नहीं किए पिछली मैच के जैसे. Fielding was very good and the bowling was according to the field set, that is the plans that they made already. So yes, they did not falter from the plans. They grabbed on to their chances and bowled in good areas. आज भी हमने देखा बॉल स्विंग हो रहा था. दीपक चहर was given 3 overs up top. Deshpande also doing very well with just a bit of swing that he created. And in the middle overs, definitely Ravindra Jadeja. जब चेन्नई की ग्राउंड पे इतना ड्यू आ चुका है, मतलब पूरा पानी पानी हो गया है चेन्नई के ग्राउंड पे, जडेजा विद द वेट बॉल, काफी डिफिकल्ट होता है एक स्पिनर के लिए इतना गीला बॉल ग्रिप कर पाना एंड बॉल इन परफेक्ट एरियाज. शार्दुल ठाकुर को ही आप उठा के देख लो, एक सर के ऊपर नो बॉल डाला था उन्होंने एडन मार्करम को. सो यस, इट वाज डिफिकल्ट टू गेट अ ग्रिप ऑन द बॉल, बट जडेजा मेड इट पॉसिबल. ही वाज बॉलिंग इन पिन पॉइंट एरियाज. मतलब स्टंप्स, हम जानते हैं जडेजा से एक्यूरेसी इज नेक्स्ट लेवल. और आज जो उनको एक विकेट मिली, दैट इज अ सरप्राइज बाउंसर दैट ही बोल्ड. It is a very new delivery that we see from Ravindra Jadeja. ऐसी एक डिलीवरी मैंने कृणाल पंड्या को डालते हुए देखा था लखनऊ की एक मैच में, but Jadeja replicated in. That was a quick bouncer, 105 clicks bouncer coming from a spinner. It definitely surprised the batter, and of course it was MS Dhoni who took upon the catch, and it was actually just a downhill batter for Hyderabad. जैसे ये 3 विकेट आपकी पावर प्ले में गिर गई, एडन मार्करम एंड अदर बैटर्स हु आर कमिंग इनटू बैट, क्लासिन को छोड़ के, have not made a lot of runs for Hyderabad in that middle overs. So yes, it was pressure on. और आज हमने देखा, मैंने पहले भी कहा, the pitch was not that good. Grip बहुत बढ़िया था पिच का. It was a slowish pitch and none of the Hyderabad batters were able to time the ball. Yes, it was fantastic accuracy with which CSK bowled, and also that one Yorker from Pathirana. It was fabulous. Broke the stumps, by the way. So yes, the stumps had to be replaced, but it was a fabulous Yorker.
to dismiss Aiden Markram. It was pinpoint perfection. And again, CSK just dominated at their home. That is what we are used to see. But yes, the points table definitely interesting. With RCB winning again, DC winning last 4 of their 5 matches. Punjab got a win last time. CSK gets a win. So all the teams who were not winning in the past week have come back stronger this time. This week is very, very interesting. We are approaching the business end of the tournament and it is getting very, very interesting. So, yes, do not forget to tune in to our channel almost after every day where we present you the recap and the reviews of all the matches. You can also check out our Instagram page for memes and more cricketing stuff. Yes, India's World Cup squad can be announced tomorrow and you can expect a video from our side. So, do not forget to click like, share, and subscribe for your non stop cricketing action. I'm your host, Nishit Dave, signing off.